Good morning, students. It's me, Miss SANIA, your English teacher, and today we are back with another lesson. As you all know that we have completed nouns and articles in the previous classes, so today I am going to take a start with prepositions. The major reason why am I going to emphasize more on prepositions because there were multiple questions which were included in your past papers about prepositions. So let's get started. But before that, kindly hurry up and grab your notebook along with pencil or pen and start noting the important pointers which I am about to tell you. Now, let's move forward. Now, when we see prepositions, which you can see over here, there are so many things in this room. And you can see there's a girl, she's sitting right on the bed. So there are so many prepositions over here. First, we will study about what are prepositions, how many kinds of prepositions are there, and then we'll come back and then you will tell me from this picture that how many prepositions can you see in this picture. Now, let's move forward. All right. What is a preposition? A preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. As I always told you that kindly try to break the terminologies and identify the meanings. Preposition is a word which link up nouns. Nouns, you're already familiar with nouns. Pronouns, you are already familiar with pronouns, that what exactly pronouns are, or phrases to other words within a sentence. Now, when I talk about nouns or when I talk about pronouns or when I talk about phrases, so they all are linked up together in a sentence. They act to connect the people, object, time, and locations of a sentence. Preposition is that word which connects each and everything all together. Remember one thing which I already stated in my previous lecture, that whenever you will talk about nouns, so nouns are present in each and every sentence. You can't say that nouns are just present in a single sentence and you cannot see any noun in another sentence. There is no sentence in this universe in which nouns are not present. I will try to keep the lecture mix and mash up like English plus Urdu so that it would be much more convenient for all of you to understand what exactly I am trying to deliver. All right. They act to connect the people object. I've already mentioned you this thing. Prepositions are usually short words. When I talk about short words, then it doesn't mean sentences, it means short words, okay? And they are normally placed directly in front of nouns. So whenever we talk about nouns, so they're placed directly in front of nouns, it means with nouns. They are placed over there. In some cases, you'll find prepositions in front of gerund verbs. What are gerund verbs? A verb from which functions as a noun. See, as I've already mentioned in this upper area, that prepositions are placed with nouns. How? You can see there's a picture which is given on the right side. What exactly can you identify from this picture or what your eyes are seeing in this picture? When I found or when I see about my observation that I can see that there is a box and under the box there is an animal. Which kind of animal? Well, there is a tail, there are two of the legs which I can see, and I can see one hand. So I think it's a mouse according to the appearance which I can see. That is predictable. All right. Now, so what when I talk about there is a mouse, can I say that mouse is a preposition? No, mouse is not a preposition. When I say that box is a preposition, no, box is not a preposition. When I come back to the definition, it says that it is in front of the noun. When I talk about box, yes, box is a noun. When I talk about mouse, yes, mouse is a noun as well because mouse is an animal and box is a thing. When I closely observe this picture, then what sentence can I make from this picture? Let me think and figure it out. Well, I think that the sentence could be
The mouse is under the box. Yes, it is the sentence which I have seen, or it is the sentence which is according to my observation. So there is a preposition in this there is a preposition in this sentence which I have said. What is that preposition? Well, that preposition is under. Alright. How can I say that under is a preposition? Let's move forward and figure it out. Now, preposition of time. When I talk about prepositions, as we have already seen about the kind of articles, we have already learned about the kinds of nouns. So when we are talking about prepositions of time, then yes, definitely prepositions also have multiple different kinds, right? Basic example of time preposition includes at, on, in, before, and after. Alright. They are used to help indicate when something happened, happens, or will happen. Alright. See, as I always mention you this thing, that kindly try to predict the meaning from the above area, from the above highlighted subject which is given over here. When I am talking about preposition of time, when it is saying time, it means that it is talking about something which is related to time. It is talking about calculations, it is talking about measurement, or it is talking about, no, it's not talking about calculations. In some way you can say that it's talking about calculation, a calculated time. In some ways you can say it is talking about measurements, how you're measuring time, that how much distance should be covered within how many hours. So these all things included in time. Now when we talk about prepositions of time, now I'm just taking the lecture towards a mix mashup one, so that everyone can understand the lecture very clearly. All right. preposition of time वक्त की बात कर रही है. आप किसी भी वक्त को उठा लें, वो चीज आपकी preposition of time कहलाती है. किस तरीके से? यहाँ पर there are multiple terminologies which are used over here, which you can see. जैसे कि happened, happens, or will happen. Happened, past. Happens, present. Will happen, that would be your future. Alright. Now, when you see it on your right side, तो आप देख सकते हो 5 W's यहाँ के ऊपर दिए हुए हैं. ठीक है, सॉरी 6 W's आएंगे यहाँ पर. Was, when, who, what, where, and why. Alright. So there are 6 W's which you can see on the right side. W's means that you're answering all these questions in preposition of time. Preposition of time में ये तमाम चीजें given होंगी, and then you have to identify कि हाँ इसमें से preposition of time कौन सा है. Now when we are talking about preposition of time, so you can see it on the left side, the description which is given over here. Preposition of time आपका होता है at, on, in, before, and after. These all are prepositions of time. It can get a little confusing though, as many different prepositions can be used. Yes, absolutely right. कि आपके बहुत सारे different prepositions भी use हो सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम categorize कर रहेंगे किस तरीके से कि preposition of time exactly होते कौन कौन से है. Alright, moving forward. Now, when I talk about at, so you can see there is a picture which is given on the left side. Alright, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से क्लॉक जो है वो मूव हो रही है. ठीक है, इट इज स्टेटिंग दैट कि ये जो है ये आपका preposition of time है. सही है. Now let's move forward towards the definition. You have already seen the clock. This preposition of time is used to discuss clock times, holidays, festivals, and other specific time frame, including exceptions such as at night. ये जो आपका preposition of time होता है, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा होता है. Such that, for example, holidays हुई, festivals हुए, या दूसरे आपके specific events आएंगे, ये सारे हुए, तो वहाँ पर आप जो है वो at को use करते हो. There is an example which is listed below, at night. अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो?
यहाँ पर आप टाइमिंग्स डिस्कस कर रहे हो, यहाँ पर आप डेज डिस्कस कर रहे हो कि इस वक्त रात का वक्त है, तो उससे पहले आपने क्या यूज किया, आपने at यूज किया. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. In. In is another type of preposition which lies under preposition of time. Alright. When I talk about in, so you can see on the right side it is written. We'll also discuss the picture which is given on the right side. First, we will discuss the description which is given on the left side. Alright. This preposition of time is used to discuss months, seasons, years, centuries, general times of the day, and longer periods of time, such as in the past. Now, when we talk about in, तो हम इनको बहुत सारे purposes के लिए use कर रहे होते हैं, भले वो months हो, seasons हो, years, centuries हो, general timings हो, तो उसमें हम जो है वो in use कर रहे होते हैं, such that ये एक past statement है, in the past. अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, यहाँ के ऊपर आप जो है वो ये चीज बोल रहे हो कि पास्ट में जो ये वाली यानी पास्ट में मेरे साथ ये हो चुका है, तो ये जो सेंटेंस की आपका स्टार्टअप होगा तो वो आपका इन द पास्ट से होगा. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन, सो यू कैन सी देयर इज एन एग्जांपल व्हिच इज गिवन ऑन द राइट साइड. इसमें एक कैट है, सही है, और एक जार है, राइट. तो अब यहाँ पर सेंटेंस देख लीजिए, द कैट इज इन द जार. आपने देखा कि यहाँ के ऊपर हमने इन को यूज किया क्योंकि ये टाइम फ्रेम बता रही है कि किस तरीके से कैट जो है वो इस जार में गई. Similarly, coming on to on is another part which comes in preposition of time. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of the days of the week. ये जो आपका preposition है ये आपका certain days discuss करता है week के, या फिर certain portions discuss करता है week के, यानी कि divided portions या फिर divided दिनों की बात करता है. स्पेसिफिक डेट्स की भी बात करता है या स्पेशल डेज की बात करता है, जैसे कि न्यू ईयर आपका एक डे हुआ उसकी बात करेगा. ठीक है. अच्छा, हम इसको यूज किस तरीके से कर रहे हैं. देयर इज एन एग्जांपल व्हिच इज गिवन ओवर हियर. ऑन, द कैट इज ऑन द जार. कैट जार के ऊपर है. नाउ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ के ऊपर जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, यहाँ के ऊपर तो कहीं से भी वो ऑब्जेक्ट की बात नहीं करी, लेकिन स्टिल यहाँ के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट आया है. एज आई मेंशन बिफोर अबाउट इट दैट सी prepositions आपके बहुत सारी situations में यूज होते हैं. इट इज कंफ्यूजिंग. हम सिर्फ और सिर्फ ऑन को preposition of time में यूज नहीं करते, बल्कि हम और भी कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, which you will came to know as with the passage of time when we will move forward. All right. Now, when I talk about on, I want all of you kindly make 2 examples on your own of in, on and at. खुद से आपने 2 sentences बनाने हैं, then you have to submit your assignment to me. All right. Now, when I'm talking about on, जैसे कि वो week और portions की बात कर रही है, ठीक है. Let me just figure out a sentence. Let me say that it was raining in the morning. All right. It was raining in the morning में on नहीं आ रहा है, लेकिन it was raining in the morning में in आ रहा है. ठीक है. Similarly, अगर मैं weeks की बात करूं तो उसमें आ जाएगा that on Monday I'll go for shopping. ठीक है. So this is how आप किस तरीके से इनके sentences को बनाएंगे. सही है. I've already given you 2 examples. Under, अब यहाँ के ऊपर under देख लीजिए, under यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, but that is an exceptional information which I'm giving. Under, the cat is under the jar. Cat jar के नीचे है. ठीक है. So that was preposition of time. Preposition of time examples in the following sentences are in bold for easy identification. There are further more examples of preposition of time which are listed below. Let me just discuss these examples one by one with all of you. All right. Now, the first example number 1. I was born on July 4th, 1982, 1982, full stop. Now, you see that whenever we talk about English, जब भी हम English की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अपने दिमाग में रखना होता है. Let's suppose यहाँ पर ये बहुत मेजर चीज़ है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये रूल नहीं पता होता, तो let me just tell you that rule. See,
हम जब भी इंग्लिश में डेट, मंथ एंड ईयर की बात करते हैं, ठीक है, हमने हमेशा यही स्ट्रैटेजी की है कि बचपन से हमने जो है वो यही सीखा कि आपने पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, उसके बाद जो ईयर चल रहा है वो लिखना है, राइट। लेकिन जब भी आप इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश में ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है। इंग्लिश में क्या चीज़ होती है कि आप जब भी लिखते हो, आप जो भी न्यूज़पेपर देखोगे, so you can see it on the corner side of the newspaper where the date is situated. Kindly closely look at the date. हमेशा month आपका उसमें पहले होगा, then उसमें आपकी date आएगी, then there will be a comma and then आपका जो year है वो आएगा. So this is exactly the sequence of how you have to write down date in English. You have to follow the same sequence. For example, if you're adding on an information into your comprehension, or if you're adding on an information into your composition paper में, तो आपने date का जो format है वो यही लिखना है, ठीक है। Now let's move forward to the first sentence. I was born on July 4th, 1982. मैं July 4th, 1982 को पैदा हुआ। अब यहाँ पर हमने on use किया है। Coming back, on कहाँ पर यूज करना है? जहाँ के ऊपर आप सर्टन वीक्स की या सर्टन डेज की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक डेट्स एंड स्पेशल डेज की भी बात कर रहे हो। वो पैदा हुआ, ये उसका स्पेसिफिक एंड स्पेशल डे है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, आई वाज बोर्न इन 1982. नाउ देयर इज समथिंग ओवर हियर एवरीवन। हमने वहां पर जब पूरे मंथ की बात की तो वो एक स्पेसिफिक चीज थी, we have written on, लेकिन यहाँ के ऊपर I was born in 1982 हमने ऐसा क्यों किया? हमने यहाँ के ऊपर on क्यों नहीं लिखा? बहुत सारे लोग होंगे जिनका ऑब्वियसली ये क्वेश्चन होगा। Now let me answer you this question. See, हमने यहाँ पर 1982 से पहले in लिखा और हमने on नहीं लिखा, उसका बेसिक पर्पस ये है, you have to figure out preposition according to the sentence. If I say that I was born on 1982, it doesn't make any sense. It is not giving you a clear meaning. How? It is talking about, it is talking about special days and special dates. Special dates means that it is highlighting you a complete information that कब हुआ, क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। But when we are talking about this example, तो ये example आपको पूरा specifications नहीं बता रही है. This example is only highlighting you about the year that he was born in this year. Similarly, coming back, you can see that ये discuss करता है months को, years को, seasons को on general basis. तो यहाँ के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मंथ कह रही हूँ, ईयर दिया हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ के ऊपर आप इन लिखोगे, ऑन नहीं लिखोगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप कि यहाँ के ऊपर ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई होगी बहुत अच्छे से कि ऑन और इनको हमने किस तरीके से जो है वो लिखा है। ऑलराइट, now moving towards the next one. I was born at exactly 2 a.m. Alright. Now, अब यहाँ के ऊपर हमने at क्यों लिखा? हमने यहाँ पर on या in क्यों नहीं लिखा? Let's go back and see. At हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं? जब हम स्पेसिफिक टाइमिंग्स की, हॉलीडेज, फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम की बात कर रहा है। जब भी आपका टाइम फ्रेम की बात होगी, वहां के ऊपर आप at को यूज करोगे। Coming back to that example, you can see exactly 2 a.m. 2 a.m. आपको एक टाइम फ्रेम बता रहा है। ड्यू टू दिस रीजन हमने यहाँ के ऊपर at को यूज किया है। Now coming to another example. I was born 2 minutes before I was born 2 minutes before my twin brother. अब यहाँ के ऊपर हमने before यूज किया, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट इस तरीके की थी कि वो पहले पैदा हुआ, राइट, 2 मिनट पहले पैदा हुआ। तो यहाँ के ऊपर आप बिफोर लगाओगे क्योंकि आप यहाँ पर पहले की स्टेटमेंट की बात कर रहे हो। सिमिलरली, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई वॉज बोर्न आफ्टर द ग्रेट वॉर एंडेड। अब आप क्या बात कर रहे हो? जब वॉर खत्म हो गई उसके बाद वो पैदा हुआ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ के ऊपर आपको क्या लगाना था? यहाँ के ऊपर आपको लगाना था आफ्टर, जो कि यू हैव प्लेस्ड ओवर हियर. So I hope that all of these examples are clearer to you. Now let's move forward. All right. The above makes
it seemed quite difficult with 5 different prepositions used to indicate when something happened. However, there is a set of guidelines that can help decide which preposition to use. For years, months, seasons, centuries, times of days, use the preposition in. अब वो यहाँ पर ये चीज बोल रहा है कि माइट बी पॉसिबल इट इज समहाउ वेरी मच ट्रिकी फॉर यू, या फिर आपको जो है वो एनालाइज करने में जो है वो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रही हो कि इसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे. अब उसने दोबारा से आपको ये चीज बोली कि देखिए जब आप ईयर, मंथ, सीजन, सेंचुरीज, टाइम्स, डेज की बात करोगे तो वहां पर आप इनको लगाओगे. There is an example which is given on the right side. Coming to this example, you can see it says that the cat in the hat. राइट. अब आपने क्या किया, एक सिचुएशन थी, एक आपको सिचुएशन बता रही है द कैट इन द हैट. आपने बताया कि कैट, आप इसके हेड की बात करो, द कैट्स हेड इज इनसाइड, राइट, इट्स इन द हैट व्हिच यू कैन नॉट सी. तो ये आपकी जो है वो एक सिचुएशन आ जाती है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिमेंबर कि आप इन चीज़ों के लिए इनको यूज़ नहीं कर रहे होते, इनके और भी पर्पसेस हैं. वील मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी दैट. I first met John in 1987. Month था, that's why in आया है. Sorry, year था, इस वजह से in आया है. ठीक है. It's always cold in January. Month था, that's why we have placed in. Easter falls in spring each year. Spring season है, that's why we have placed in according to the rule which we have discussed before. We eat breakfast in the morning. It is telling you about a situation कि कौन सी situation में they're having their breakfast. ठीक है, it is telling you about a day or night. That's why हम यहाँ के पर in place करेंगे. The Second World War occurred in the 20th century. Second World War, अब यहाँ के पर आपकी date आ गई है. That's why we have placed in over here. Alright. Now, moving forward, for days, dates, and specific holiday days, use the preposition on. जब हम किसी specific days की या फिर किसी specific dates की या किसी specific holiday की बात करते हैं तो वहाँ के ऊपर हम preposition on को use करते हैं. How? Number 1, we go to school on Monday but not on Sunday. There would be a full stop at the end. ठीक है, हम मंडे को स्कूल जाते हैं बट नॉट ऑन संडे बिकॉज इट्स अ पब्लिक हॉलिडे. दैट्स व्हाई. ठीक है, ऑन को हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ के ऊपर हम स्पेसिफिक वीक्स की या पोर्शन ऑफ वीक की बात कर रहे थे. रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. लेट मी गो बैक एंड शो इट टू यू. ऑन में वो क्या चीज बोला है, स्पेसिफिक वीक और पोर्शन की आप बात करेंगे तो वहां के ऊपर आप ऑन को प्लेस करेंगे. नाउ कमिंग बैक टू दिस, यहाँ के ऊपर स्पेसिफिक वीक के पोर्शन की बात हो रही है. दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर ऑन को प्लेस किया है. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, क्रिसमस इज ऑन December 25th. क्रिसमस December 25th को है. यहाँ पर आपका मंथ भी आ रहा है और डेट भी आ रही है, इसी वजह से स्पेसिफिक बात हो रही है. क्रिसमस एक स्पेशल इवेंट है. दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड ऑन. Buy me a present on my birthday. Special day की बात हो रही है, इस वजह से हमने on लगाया है. Alright. Now you can see there is another example which is given over here on the right side. Birds on a wire. Right. It is another example which you can see over here. आप एक specific चीज की बात कर रहे हो, इसी वजह से हमने यहाँ के पर on place किया है. Now moving forward. All right. अब हमने ऐड को डिस्कस किया था. फर्दर हम ऐड को थोड़ा सा जो है वो और ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो ऐड को लेकर और ज़्यादा क्लियर हो जाए. फॉर टाइम्स, इंडिकेटर्स ऑफ एक्सेप्शंस एंड फेस्टिवल्स, यूज द preposition ऐड. Whenever we are talking about times or whenever we are talking about indicators या फिर हम जब exceptions या festivals की बात करेंगे तो वहाँ के ऊपर हम यूज़ करेंगे preposition ऐड को. राइट. Families often argue at Christmas time. Families often argue. अब यहाँ पर आप specific time की बात कर रहे हो, specific festival की बात कर रहे हो. ठीक है, इसी वजह से हमने जो है वो
एट को यूज किया, एंड यू कैन सी दैट क्रिसमस के बाद टाइम भी लिखा हुआ था. सिमिलरली लेट्स लुक एट द सेकंड सेंटेंस. I was faster at night. अब यहाँ पर इसने बता दिया डे है या नाइट है, वो आपको वो चीज़ हाईलाइट कर रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ के पर at को यूज़ किया है. Her shift finished at 7 p.m. ऑलरेडी यहाँ के पर टाइम दिया हुआ है, तो टाइम से पहले हमेशा at आएगा. There is another example which is given on the left side. You can see there is a picture over here and it's written the wedding at Cana. अब यहाँ पर आप देख सकते हो वो प्लेस आपको बता रहा है कि कौन सी जगह थी, इसी वजह से हमने यहाँ के पर at लगा दिया है. ठीक है, जब भी प्लेस इंडिकेट हो तो वहां के पर भी आपका जो है वो at आता है. ठीक है, ऑलराइट. Now let's come on to before and after. Before and after should be much easier to understand than the other examples of prepositions of time. Before and after को understand करना और ज़्यादा आसान है as compared to other examples of time. Before are used to explain when something happened, happens or will happen. But especially in relation to another thing, they both are interconnected to one another. Before जो भी कुछ हो चुका है उसको बताना आसान होता है. After जो भी कुछ होना है obviously आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्शन दे सकते हैं, but you cannot say that कि हाँ ऐसा होगा ही होगा. It cannot happen in this case, right? Number 1. Before I discovered this bar, I used to go straight home after work. Before I discovered this bar, जब तक मैंने इस बार को discover नहीं किया था, I used to go straight home after work. मैं straight away घर चला जाता था, right? After बाद की condition बता दी, before पहले की condition बता दी. We will not leave before 3 p.m. उसने ये बोल दिया कि वो 3 बजे से पहले वहां से नहीं जाएगा. पहले means before, बाद में means after. David comes before Brian and David comes before Brian in the line but after Lucy. David Brian से पहले लाइन में लगता है और Lucy के बाद. It means कि आप पहले और बाद के बीच में जो David है आप उसकी बात कर रहे हैं. Now there is another example which is given on the right side, which you can see, right? Before आपने देखा है कि before paper like क्या चीज है, ठीक है, and then after you can see that कि afterwards जो है वो क्या चीज है. Who am I? Santa Claus. I just want 3 ideas, right? Okay. So moving towards the next slide, which you can see over here. Other prepositions of time could include during, about, around, until and throughout. ये बाकी के prepositions हैं जिसमें आप ये तमाम चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं. किस तरीके से? Number 1 example. The concert will be staged throughout the month of May. Concert stage यानी कि concert होगा throughout the month of May के दरमियान. ठीक है, throughout पूरे उसमें. Throughout यानी कि you can say that throughout means पूरा महीना. ठीक है, so throughout month of May means that पूरा महीना has been counted over here. ठीक है, अच्छा. Second example, I learned how to ski during the holidays. मैंने सीखा है कि sky during the holidays कैसे करते हैं. During यहाँ के पर आ गया कि during किस तरीके से इस्तेमाल होगा. He usually arrives around 3 p.m. He usually arrives at 3 p.m. ठीक है, अच्छा. देखो एक और भी चीज है, आप वो भी यूज कर सकते हो जो कि हमने preposition of time में पढ़ा है. वो भी आपके prepositions बिल्कुल ठीक होंगे, और अगर आप ये भी यूज करोगे तो भी आपके prepositions बिल्कुल ठीक होंगे. कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना इसमें. हम सिर्फ बता रहे हैं कि prepositions को किस किस तरीके से जो है वो आप यूज कर सकते हो. ठीक है. It was about 6 in the morning when we made it to bed. यानी कि हम बेड से उठे about 6 in the morning. The store is open until midnight. Until midnight store जो है वो खुला हुआ है. ठीक है. All right. Now moving towards another one, that is preposition of place. According to preposition of place, it says that
To confuse matter a bit, the most common preposition to indicate time, on, at, in, are also the most common prepositions to indicate position. However, the rules are a little clearer as place prepositions are a more rigid inception than time prepositions. टाइम प्रपोजिशंस इजी थे, लेकिन प्लेस का जो प्रपोजिशन है उसको लगाना थोड़ा सा जो है वो लाइक रिजिड हो जाता है, यानी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी ऑन एट इन में आता है, लेकिन हम किस तरीके से इसको प्लेस करते हैं फर्दर हम अभी इसको डिस्कस करेंगे. Preposition of place examples in the following sentences are in bold for easy identification. There are examples listed over here in bold for your easy identification. Number one, the cat is on the table. Cat is on the table. Let me come back and tell you. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल स्टडी की थी, दोबारा से जा रही हूँ वही दिखाने के लिए, ठीक है. Preposition of place है, place बता दिया कि jar के ऊपर है, इसी वजह से ये एक place बता रही है आपको, that's why हमने cat is on the jar लिखा है, ठीक है. Now coming back to that example. All right. जी, the cat is on the table. The dogs are in the kennel. Dogs are in the kennel. Place बता रहा है, जगह बता रहा है, कहाँ के ऊपर है वो. That's why हमने यहाँ के ऊपर in लगाया है, ठीक है. We can meet at crossroads. हम crossroad के ऊपर मिल सकते हैं. यहाँ के ऊपर वो आपको बता रहा है एक जगह का, और यहाँ के ऊपर वो आपको एक इंडिकेशन भी दे रहा है, इसी वजह से हमने जो है वो यहाँ पर at को यूज किया है, ठीक है. The guidelines can be broken down as follow. Guidelines को हम as follow broke down कर सकते हैं. On is used when referring to something with a surface. On को हम वहाँ के ऊपर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को किसी surface के साथ रेफर कर रहे होते हैं. Number one, the sculpture hangs on the wall. Sculpture hangs on the wall. यहाँ पर क्या चीज़ है? On को हम यूज कर रहे हैं something with a surface. Surface है, वॉल आपकी एक सरफेस है जिसके ऊपर आप एक चीज को हैंग कर रहे हो, सही है. दैट्स व्हाई हमने यहाँ के ऊपर ऑन लगाया है. नेक्स्ट एग्जांपल, द इमेजेस आर ऑन द पेज. इमेजेस पेज पे है, ठीक है. ऑन क्यों यहाँ के ऊपर हमने लिखा? क्योंकि आप क्या बात कर रहे हो? सरफेस की बात कर रहे हो, दैट इज पेज. द स्पेशल्स आर ऑन द मेन्यू. व्हिच इज ऑन द टेबल. सरफेस इज टेबल, मेन्यू टेबल के ऊपर है, यहाँ पे भी सरफेस की बात हो रही है, इसी वजह से ऑन. सरफेस मीन्स एक हाइट की बात करना है, सरफेस मीन्स जिसके ऊपर आप कोई चीज रख सको. Now there is another example on the right side. Let me just go through the example. All hands on desk. All hands on desk. सरफेस के ऊपर हाथ रखिए, सरफेस आपकी डेस्क हुई, इसी वजह से हमने यहाँ के ऊपर ऑन को प्लेस किया है, ठीक है. Moving forward. Now, in. When we talk about preposition of place, then how we are utilizing in that regard. In is used when referring to something that is inside or within confined boundaries. इनको हम वहाँ के ऊपर यूज करते हैं जहाँ के ऊपर हम किसी को रेफर कर रहे होते हैं या किसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं, या अंदर की बात करते हैं, या विदिन यानी बाहर की अंदर की, तो वहाँ के ऊपर हम जो है वो नहीं बाहर के अंदर की नहीं होता है, सिर्फ इन मीन्स इनसाइड. आप इनसाइड की बात कर रहे हो, अंदर की, तो फिर ये चीज वहां के ऊपर आप जो है वो इनको प्लेस करते हो बाउंड्रीज के अंदर, कन्फाइंड यानी इनसाइड. दिस कुड बी एनीथिंग, इवन अ कंट्री. कंट्री के अंदर की बात को भी इनसाइड में ही आएगा और इन वहां के ऊपर प्लेस होगा बाउंड्रीज के अंदर. मतलब यू जस्ट नेम इट, जिस भी चीज के अंदर की बात की जाएगी वहां के ऊपर आप इनको प्लेस करोगे. Now, let's go through example number 1. Jim is in France visiting his aunt in the hospital. अब आप देख सकते हो यहाँ के ऊपर अंदर की बात कर रहे हो कि she is living in France and like Jim वहाँ के ऊपर गया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में विजिट किया. यहाँ पर भी आप एक अंदर की कंडीशन की बात कर रहे हो. That's why we placed in both ways. Alright. The whiskey is in the jar in the fridge. ठीक है, अंदर की बात हो रही थी, इसी वजह से ये चीज आ गई. Now, let's move forward to the third definition. The girls play in the garden. Girls are playing in the garden. अंदर की बात हो रही है किसी सिचुएशन के, that's why हमने यहाँ के पर जो है वो इनको प्लेस किया है, ठीक है. All right.
ब्रेकफास्ट इन द क्लासरूम, ब्रेकफास्ट आपका क्लासरूम में है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अंदर की बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड ओवर हियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एट इन preposition of place के preposition of place में आप एट को किस तरीके से जो है वो प्लेस करोगे, ठीक है. At is used when referring to something at a specific point, certain point. जब भी आप किसी certain point की बात करते हो तो वहां के ऊपर आप at का इस्तेमाल करते हो. Number 1, the boy are at the entrance at the movie theater. Now when we are talking about movie theater तो वहां के ऊपर आपने क्या बात की, something specific, कि लड़का खड़ा हुआ है एंट्रेंस पे मूवी थिएटर की, तो इसी वजह से हमने यहाँ के ऊपर भी एट प्लेस किया और यहाँ पर भी हमने एट को प्लेस किया है. Let's move forward to example number 2, which says that he stood at the bus stop at the corner of Water and High Streets. So you can see it over here कि वो bus stop के ऊपर रुका, specific point था, the corner of water डायरेक्शन बताया, एंड हायर स्ट्रीट डायरेक्शन बता रहा है कि ये दोनों एरियाज के बीच में वो जो है वो रुका है, दोनों जगहों के ऊपर, ठीक है, बस दोनों जगह के ऊपर रुकी है. ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3, वी विल मीट एट द एयरपोर्ट. ऑलरेडी एक डायरेक्शन था, एक टाइमिंग्स थी, एक बता रहा है कि एक सर्टेन जगह के ऊपर हमने मिलना है, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ के ऊपर जो है वो एट को प्लेस किया. Now there is another example which is given on the right side. Kindly go through this example which says that slow children at play. वो आपको एक डायरेक्शन बता रहा है, एक बात बोल रहा है कि जब भी बच्चे खेल रहे हों तो काइंडली वहाँ पर जो है वो आप स्पीड को स्लो रखिए. अगर आप स्पीड को जो है वो स्लो नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, lots of other prepositions of place such as under, over, inside, outside, above, and below are used in English. There's, however, a lot less confusions as they refer to rigid prepositions rather than abstract ones. Number 1, the cat is under the table, cat table के नीचे है. इससे पहले वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि बहुत सारे prepositions होते हैं और भी, और उनके डिफरेंट यूसेज होता है जहाँ पर हम उनको जो है वो इस्तेमाल कर रहे होता है, ठीक है. ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2, put the sandwich over there. सैंडविच को वहां रख दो. पॉइंट नंबर 3, the key is locked inside the car. की कार के अंदर लॉक हो चुकी है, inside अंदर, जगह की बात कर रहा था इसीलिए अंदर आया, ठीक है. They stepped outside the house. वो घर के बाहर खड़े हुए हैं, यानी कि घर के सॉरी they stepped outside the house, वो घर के बाहर निकले हैं. Major is rank above corporal, ठीक है. इस रैंक के above आपका मेजर का रैंक होता है, ठीक है. He is waving at you from below the stairs. वो आपको स्टेयर्स के नीचे से वेव कर रहा है, ठीक है. ये सारी आपकी एग्जांपल्स थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हाँ और कितने कितने टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस होते हैं ये, और उनको किस किस तरीके से जो है वो आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू मेक इट क्लैरिफाई टू ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज कि हमने जितने भी अब तक भले वो preposition ऑफ टाइम पढ़े हैं या फिर हमने वो preposition ऑफ प्लेस पढ़े हैं, what you have to do all of you is कि आपने इन तमाम prepositions की you have to make a sentence and then you have to discuss that sentence with me, ठीक है. जितना ज़्यादा आप sentence को लिखेंगे खुद से अपने notebook में for practice, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी इंफॉर्मेशन में जो है वो इजाफा करेगी, ठीक है. दूसरी चीज़ ये है that you have whatever you are doing in your notebook, definitely you have to share each and everything with me, ठीक है. That is the part 1. This is the part 1 of this video. I will share the part 2 of this video with you as well. अब तक की जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है that what exactly is your assignment. If you're having any questions, so yes, you can ask me in the comment section below or you can ask me on WhatsApp group अगर आपको जो है वो इससे related मुझसे कोई भी question पूछना है. Prepositions बहुत ज़्यादा important है which I've already highlighted. Prepositions बहुत सारे होते हैं which I already highlighted, but you have to figure it out by yourself
कि which preposition you have to utilize where. Read the sentence thrice and then answer. And yes, there is one more thing, kindly आप लोगों की सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी हमेशा लिखने के बाद उसको रीचेक कर लिया कीजिए कि आपने सेंटेंस फॉर्मेशन उसकी सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है. Inshallah, we'll return back in the part 2 of this. Till then, take care everyone. Barakallah. Allah Hafiz.